Assalamu alaikum. I'm Mirza Suhaibig and you're watching my channel about the biology. So I'm here to present the next second half chapter of the chapter number 17. और इससे पहले हम जो कर रहे थे वो थे बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सेशन था और चैप्टर नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. So the first MCQ of this second half of the chapter, there is a wave of it is a wave of electrochemical changes which travel along the length of neuron. जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है न्यूरॉन के आर पार जो है वो एक चेंजेस आती हैं, उस चेंजेस को क्या बोलते हैं? either this one is called as the membrane potential, nerve impulse, electric potential or none of these. So none of these तो नहीं हो है क्योंकि wave of electrochemical change जो है तो ये wave of electrochemical change जो है इसे हम नाम देते हैं, this is known as a nerve impulse. That means nerve impulse actually it is a wave of electrochemical change that travel along the length of neuron. So the next MCQ number 32 dash is a measure of capacity to do electric work. Basically potential होता है is a capacity to do work. But when we say about the electric work, then definitely it is not the membrane potential, it is the electrical potential. So we are discussing about the electrical potential. So C is the right answer of this MCQ number 32. So which one is the next MCQ? MCQ number 33. So next MCQ number 33, the net difference of charges across a non-conductive neuron. एक ऐसी न्यूरॉन जिसके जो कि कंडक्शन नहीं हो रही, जिसमें इम्पल्स फ्लो नहीं कर रही, उस न्यूरॉन के अंदर जो है वो नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस जो है उसकी आउटर इन्वायरमेंट में और इनर इन्वायरमेंट में उसे हम क्या बोलेंगे? आइदर दिस वन इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमेशा जो है वो एक कंडक्टिव न्यूरॉन जो है उसकी बात करते हैं. सो द राइट आंसर इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. Because this one is called as it is the potential of a non-conductive neuron. So the next MCQ number 34, in resting membrane potential, uh, blank makes the इनसाइड मोर नेगेटिव. वो कौन सी चीज़ है जो इनसाइड जो है वो ज़्यादा नेगेटिव बनाती है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव जो है इनर इन्वायरमेंट जो न्यूरॉन का होता है वो नेगेटिव करती हैं, लेकिन एक्चुअली सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस या ऑल ऑफ दीज. सोडियम आयंस तो एक्चुअली आउटर साइड पे होते हैं ज़्यादा, जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. तो नेगेटिवनेस जो है इनर इन्वायरमेंट की, दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो MCQ number 35 dash 1 is not related to resting membrane potential. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नहीं होता? नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस बिल्कुल होते हैं, जो कि इनसाइड जो है 0.05 वोल्ट. इट इज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल. either this one is right or wrong. माइनस 0.07 वोल्ट ये तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का एक्चुअली पोटेंशियल है. लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस बी होता है. सो ब्रेवो, दैट मीन बी इज द राइट आंसर. सो 0.05 वोल्ट्स हैं वो इसमें आ जाता है कि वो ऐसा नहीं है. द वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन इज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि एक न्यूरॉन में होता है, जब उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल फाइंड आउट किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या है? 0.05 वोल्ट्स, 0.07 वोल्ट्स, -70 मिलीवोल्ट्स और 50 मिलीवोल्ट्स. 0.05 वोल्ट्स और 50 मिलीवोल्ट तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, बट 0.07 वोल्ट्स नहीं है क्योंकि resting membrane potential always be in the negative. So -70 millivolt is the right answer. Blank one is not a neurotransmitter. Acetylcholine, dopamine, serotonin, insulin. Insulin is a hormone, so this one is not a neurotransmitter because acetylcholine, dopamine, serotonin, these are the neurotransmitters. So insulin was the correct answer. So option D. And the next MCQ number 38, blank are the chemicals which are released from the axons ending of the neuron at synapse. इनमें से कौन से ऐसे chemicals हैं जो
रिलीज होते हैं एक न्यूरॉन की एक्सोन एंडिंग से, और वो साइनेप्स के करीब उनका रिलीज होना होता है. सो आइदर दीज आर द हार्मोन्स, इनहिबिटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर, नन ऑफ दीज. सो दीज केमिकल्स मैसेंजर्स आर कॉल्ड एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स. क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ स्कल दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड. क्रेनियम जो है वो स्कल का हिस्सा है, और ये किसको प्रोटेक्ट करता है? एक तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिबल कॉलम जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी जो है वर्टिबल कॉलम के साथ साथ मूव कर रही होती हैं. सो इसको भी क्रेनियम प्रोटेक्ट नहीं करता. ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं हो सकता. सो द राइट आंसर इज द न्यूरल आर्चेस. सो सी इज द करेक्ट आंसर. The next MCQ number 40, blank controls the body temperature. Now we are discussing about the different parts or the different functions of the brain. So dash control the body temperature. Thalamus, amygdala, hypothalamus, hippocampus. Hippocampus basically store the long-term memory, while thalamus control the auditory and visual responses, while amygdala control the different feelings. So the right answer is hypothalamus, because it controls the body temperature of an organism. Blank is the largest part of brain. Which one is the largest part of brain? Thalamus? No. Hippocampus, cerebellum. Cerebellum is the short part. So the right answer is cerebrum. Cerebrum is the largest part of our brain. So the next MCQ number 42, blank involved in the storage of long-term memory. So as I already discussed, the hippocampus, option B, is the right answer, because it stored the long-term memory. So next MCQ number 43, a nervous disorder characterized by the involuntary tremor is the. एक कौन सा नर्वस डिसऑर्डर है? ऐसी कौन सी नर्वस डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर नर्वस डिजीज है कि जिसके अंदर जो है वो झटके लगते हैं बॉडी को, और वो हमारी विल के मुताबिक नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. सो एपिलेप्सी, पार्किंसन, जजेंटिज्म, अल्जाइमर. Alzheimer look like the dementia state, so not at all. Gigantism is a condition of the enlarged body part or height. Parkinson is another state or related to brain, but epilepsy, mirgi जिसे बोलते हैं, so epilepsy is the right answer, option A. The next MCQ dash is involved in the learning and memory storage of behavior. इनमें से कौन है जो लर्निंग और मेमोरी स्टोरेज जो है उसको कंट्रोल करते हैं? सो विच वन इज द राइट आंसर? मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम और सेरिब्रम. जो मेमोरी स्टोरेज है बिहेवियर्स के लिए, सो द राइट आंसर इज सेरिबेलम. सेरिबेलम जो है वो इसका राइट आंसर है. द नेक्स्ट एमसीक्यू, ब्लैंक इज कॉल्ड ऑडिटरी रिले सेंटर. इनमें से कौन है जो ऑडिटरी रिले सेंटर कहलाता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, बोथ ए एंड बी. Which one is the correct answer? So the right answer is midbrain, because midbrain control the auditory relay center. It receives the signals from the forebrain and transport it to the hindbrain. That is the next part of the brain. Blank produce sensation of sexual arousal. So which one is a part of our body? Which one is a part of our brain that control the sexual arousal conditions? So thalamus, amygdala, hypothalamus, hippocampus. Because amygdala control the feelings, so sexual arousal is also kind of feeling, so that's why it control the sexual arousal uh, responses. So dash is a part of spinal cord, consists of cell body and non-myelinated nerve fiber or tracts. The right answer is A, gray matter जो है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे विजिबल होता है, लेकिन वाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे विजिबल है. ऑप्शन ए. 48 next MCQ number 48, blank are the bundles of axon and dendrites. So the right, which one is the right answer? Ganglia, nerves, both and B, cerebral ganglia. Ganglia basically is the collection of cell bodies or bundle of cell bodies. So the right answer is B, because the nerves are the bundle of axon, and you can say that the bundle of dendrons. So the next MCQ number 49, there are blank pairs of cerebral or cranial nerves. दिमाग के अंदर जो नर्व्स हैं उसके कितने जोड़े हैं? तो टोटल तो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ cranial और cerebral ganglion. There are blank pairs of spinal nerves in humans. पेयर्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली 31 पेयर्स हैं, लेकिन अगर सिर्फ नर्व्स की बात है, स्पाइनल नर्व्स की, तो राइट आंसर 62 होता है. सो ये देख लीजिएगा कि पेयर्स हैं तो 31. सो सी इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 51, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, मिक्स न्यूरॉन्स, ऑल ऑफ दीज. सभी तरह की जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में.
ब्लैंक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट इन द स्टडी ऑफ एपिलेप्सी। अगर किसी को एपिलेप्सी है तो कौन सा टेस्ट सबसे बेस्ट है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नो। एलिजा टेक्निक भी नहीं है। ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी और ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी ब्रेन के वाले से, स्केल के वाले से, सो एपिलेप्सी रिलेटेड टू द ब्रेन, सो ईईजी, that mean option C is the right answer. The highest level of blank may contribute the onset of Alzheimer disease. इनमें से कौन सा ऐसी हैवी मेटल है जो कि जिसका ज्यादा लेवल होने से जो है वो अल्जाइमर जो है वो काज होती है? जिंक, लेड, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। सो एक ऐसी एरिया जहां पर एल्यूमिनियम ज्यादा होती है वहां पर परसेंटेज ऑफ जो है अल्जाइमर की जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा है। द इफेक्टिव ड्रग्स फॉर पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज के लिए जो सबसे बेहतरीन किस्म की जो है वो ड्रग है वो कौन सी है? GDNF, निकोटीन, टेट्रासाइक्लिन, एल डोपा। सो लेवोडोपा जो है ये एक सबसे इफेक्टिव ड्रग है दैट इज यूज इन द पेशेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। ब्लैंक सिस्टम इज एसोसिएटेड विद फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। इनमें से कौन सा सिस्टम है जो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में मुश्किल है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली कंट्रोल द somatic parts of the body parts of the muscles. So sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, and CNS. Central nervous system include the brain and the spinal cord. But we are discussing about the peripheral nervous system. So option D is wrong. Option A is also wrong. Parasympathetic or sympathetic? Sympathetic control the fight and flight situation. So option B is the right answer. While the condition in which the body in the state of relaxation, that relaxation state is controlled by the parasympathetic nervous system. But the right answer of this MCQ is the option B, sympathetic nervous system. So ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर जो है यूट्यूब पे मुझे शेयर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। I will try to reply you as soon as possible. So thank you very much. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।